Good morning. Good morning. Learn vocabulary with Ramesh के 13 एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल परंपरा हो चली है YouTube पर कि स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है। पुराने समय पर एक अलग परंपरा थी जब स्टूडेंट्स टीचर्स का स्वागत करते थे। Now when education is fast becoming, business, and teachers are becoming sellers and students are becoming buyers. And this has led to a new the relationship building when teachers are becoming producers and students are becoming consumers. Earlier, teachers were the mentors. They were basically one notch higher than God. Guru, Govind, dono khade, kaake lagu paye. So Guru and Govind. Guru was the teacher and Govind was God. But when the timeline changes, and this is something that is a great damage to the values, educational values. And in such a scenario, it is almost impossible to reimagine that we will be able to have such a relationship when we will have Guru Govind dono khade. In Indian philosophy, the teachers are given a higher respect. Really very high respect. And it seems, the most of the books were also written by the teachers. So to safeguard themselves, they have written all these ideas like Guru Govind dono khade and Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Maheshwara. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Maheshwara. It means teacher is the creator, teacher is the rearer, and the teacher is the destroyer. Brahma is creator, Vishnu is rearer, and Mahadev is destroyer. These are symbols, right? There are three different forces: creative forces, and rearing forces, and destructive or destroying force. And these forces are called Brahma, Vishnu, and Mahesh. So symbolically, it goes that way. Today, the title of the chapter is Ron's Busy Day, and the word of this chapter is fix. So in this session, first we'll talk about fix, how to fix. What is fix? Fix is a verb, fix is a noun. Somebody is in a fix. He is in a fix means he's confused. He's not able to think, what should I do? I'm in a fix. Fix the problem means solve the problem. So what is fixing the problem? The match was fixed. It means it was decided in advance. There was nothing there. It was fixed. It means it was not open. The result was already decided. If something is already decided, it is fixed. So we'll have it fix. Fix means attach something. You can fix something to something. There are two nodes and you fix them. If you can fix it, it means you can attach and put in place. That is fix. What is match fixing? Match fixing means the result of the match is already fixed. So the consequences are already decided. So
Joe was fixing a new sign above the door of his shop. What was doing? Joe was fixing. It means he was putting it there. Suppose I fix somewhere here, it means I will put it right there. So if I fix something here, suppose there is a carpenter and the carpenter is trying to fix something in the wall. It means the carpenter is trying to put that structure in place. Got it? So the Ron was fixing a shelf to the wall of the garden shed so that it would hold the smaller garden tools. Suppose I have this shelf and this is the wall. Now I am trying to fix it by putting two nails through it into the wall, through the shelf and into the wall. How do we do it? There is a shelf and then we drill, we put two nails. Nails means जो दो कील है. We put two nails through the shelf into the wall and then that shelf gets fixed. So here you can see Joe was fixing a new sign. दुकान पर अपना नाम लिख रहा था above the door of his shop. The farmer was fixing some fence posts. पूरे खेत के चारों ओर क्या कर रहे हैं? कुछ फेंस पोस्ट्स, यानी फेंसिंग को जिसके बांधेंगे ना, तार बांधेंगे, उसके लिए वी नीड अ पोस्ट. तो पहले क्या करेंगे? या तो कोई पत्थर लगाएंगे या कोई पोल, कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जिस पर तार को क्या किया जा सके, बांधा जा सके. वह वाली जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे? दैट्स अ पोस्ट. कौन सी वाली पोस्ट? दैट्स फेंस पोस्ट. क्योंकि फेंसिंग किस पे करेंगे? इन दो के बीच में ना. सो दिस इज नोन एज फेंस पोस्ट. सो फार्मर क्या कर रहा था? ही वॉज फिक्सिंग सम फेंस पोस्ट इन द ग्राउंड. सो ही वॉज ट्राइंग टू पुट अ पोस्ट इन द ग्राउंड. यानी हम ये खंबा या ये वाला पत्थर क्या कर रहे थे? ग्राउंड में गाड़ रहे थे. सो यू आर ट्राइंग टू फिक्स द पोल इन द ग्राउंड और यू आर ट्राइंग टू फिक्स द स्टोन इन द ग्राउंड. और वो पोल और स्टोन क्या है? पोस्ट. दैट इज द फेंस पोस्ट, राइट? सो इफ यू put something in place, then you fix that. If there is a person with reference to something broken, something is broken, then you try to repair it. So suppose there is a central heating system and this system has gone out of order, it has broken down. If it is a broken down means we need to repair it. So to repair is to fix the problem. So I can fix means repair. When we repair a structure, जैसे कि कोई wall हो, मरम्मत करना क्या कहलाता है? Mend the wall. So आप मरम्मत कर रहे हैं, mending the wall. Put right मतलब जो गड़बड़ हो गया है, something that has gone in bad shape, something that has gone out of order. So put that thing right. Got it? So fix means put something somewhere. So if you fix a new sign, it means you place that. If you fix a fence post in the ground, again means place it or position it. If you fix a problem or a machine, means you repair it. The teacher fixed her gaze. Like, just fixed your gaze at one place. You are looking at some student
You just fix your gaze on the child's dirty shoes. It means you look at that. You concentrate your look there. You focus your look there. So you look at something means you fix your gaze, means you focus. And you find that it's dirty. So if you focus, means you fix your gaze. I'll fix him, said Jane, when her little brother hid her shoes. When you fix a person, I'll fix him means मैं उसको ठीक करता हूँ, और आप किसी व्यक्ति को ठीक करते हैं मतलब उसकी पिटाई करेंगे, मैं बताता हूँ उसको. So I'll fix him, वो मैं ठीक करता हूँ उसको, मैं ठीक करता हूँ means I will punish him, I will get my revenge, मैं उससे बदला लूंगा. So I will get my revenge, और मैं अपना हिसाब किताब बराबर करूंगा. I will get even with you settle the score. So when you settle the score, you get even with. मैं फिक्स करता हूँ means I will get even with him. मैं भी वही करूंगा जो उसने मेरे साथ किया है. So if you get one's on back, you get it back, means you get your own back. तो जो आपने खोया वो आपने वापस क्या कर लिया है, पा लिया है. That is you get your own back. So यदि आप किसी व्यक्ति को फिक्स करते हैं means आप उसको ठीक करते हैं. मैं बताता हूँ उसको कि कैसे हो. Of a person with reference to food को लेकर, Bill was in the kitchen and he was fixing lunch. It means he was making, he was preparing, he was cooking lunch. So he was preparing, he was making, or he was. If a person, with reference to an arrangement or appointment, I have fixed my appointment means I have scheduled it. So if you fix a date, you schedule it. If you fix a date means you decide it. If you fix a date means you arrange, set. तो आपने कौन सी वाली डेट सेटल की है, सेट की है, that's there. Then we have a person with reference to appearance, right? You just fix your hair. Sometimes people fix their mustache, they twirl and fix it. So mustache twirling is a kind of expression of power. You just twirl your mustache. So generally, people show it. They twirl their mustache, and when you twirl, you feel that it's power. The power flows from that twirl, right? So that becomes the channel of the power. A lot of people, right? So in Punjabi songs, you will often say twirl. So they sport a big mustache and then they twirl it. So they sport the mustache and they twirl that. So you can go, you have such a long one and with both the hands. So of a person with reference to a competition, Charlie suggested that the results of the raffle had been fixed. It means the results were rigged, they were pre-decided, they were pre-arranged, and the match was only a show. So it was a falsified competition. It was not the real competition, rather it was falsified. So it was just a formality, but the match was already fixed. So it means it was rigged. And of a person with reference to judge, referee, etc., some people claim that the referee had been fixed. It means
रेफरी हैड बीन बॉट ऑफ, पैसे दे करके खरीद लिया गया था. इट मीन्स ही हैड बीन ब्राइड. इट मीन्स रेफरी पहले से ही तय हो गया था कि मैं तो एलबीडब्ल्यू दूंगा, चाहे आप हो, बस बॉल आपके टांग के लगनी चाहिए, मैं आपको एलबीडब्ल्यू दूंगा. बिकॉज इस एलबीडब्ल्यू देने के लिए मैंने 50 लाख रुपए लिए, सो मैं तो एलबीडब्ल्यू दूंगा, वेदर you like it or you do not like it. So let's see and read the passage. Reading is fun. Reading introduces you to the diversity of views, opinions, ideas, how other people think about their life and how do they share it. So when you read something, you just read people. Basically, you are not reading sentences. Rather, you are reading life. And if you do not have this sensitivity, you do not have this interest, then you do not enjoy. The moment you feel that this is about life, you become interested. So a sentence is not a sentence. Rather, it is an essential part of human life. Right? So see, Ron was fixing a shelf, means Ron was trying to put a shelf into the wall. That's there. And of the garden shed, so that it would hold the smaller garden tools. He was having a very busy day because before that he had fixed some cans in the ground. कुछ कैन रखे उसने ग्राउंड में और उनके में मिट्टी डाली होगी, मिट्टी डाल के खड्डा खोद के उनको ग्राउंड में लगाया होगा. जो आप जानते हैं कि when you have some लोटस जब लगाते हैं या जमीन के अंदर आप खड्डा करके कुछ करते हैं तो there is a can. तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का कैन अंदर गाड़ देते हैं और उसके बाद उसमें पेड़ लगाते हैं. फिर वो पेड़ बाहर बाहर. हमारे यहाँ क्या करते हैं, सीधा मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी खोद के प्लांट लगाते हैं, फिर उसको नरिश करते हैं. He was having a very busy day because before that he had fixed some cans in the ground for the rose bushes to grow up. तो क्या किया था, रोज bushes ग्रो करें तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है कि कोई प्लास्टिक कैन उन्होंने फिक्स कर दिया हो. Before that he had fixed the car's engine, और उससे पहले उसने कार का इंजन ठीक किया. But this was a fixing day, right? fix, which had been making a bangling noise. That's a bangling noise. खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है उसमें, पता नहीं है इंजन स्मूथली क्यों नहीं चल रहा है. Why is it making a noise? और noise तो है. So it had a bangling noise when he had finished the shelf. जब शेल्फ को फिनिश किया, Ron felt that he deserved a rest. He stopped to smoke a cigarette. लोग सिगरेट के 2 कश मारते हैं. They have this 2 puffs of cigarette and feel revived. ऐसा लगता है कि पावर, ऐसा लगता है कि सारे विटामिन जो है वो सिगरेट के पफ से अंदर जा रहे हैं, सारी जो एनर्जी है वो एक साथ रिवाइव हो रही. बट दैट इज अ बैड फॉर्म. That is a nerve stimulator. So what tobacco does, what nicotine does, it stimulates your nerves. Then you feel, एक बार के लिए आपको लगता है कि you are revived, but actually your nervous system is damaged. So see what happens, which had been making a banging noise when he had finished the shelf and felt that he deserved a rest. He stopped to smoke a cigarette, only to find Janice, his wife, looking at him disapprovingly. Darling, cigarette पीना बुरी बात है, right? ऐसे देखा disapproving way में, तो बेचारा वहां से हटके दूसरी तरफ चला गया होगा. That's there. So adding disapprovingly, in fact, all her attention was fixed on his cigarette because he had promised to give up smoking. अब वहां रोन ने प्रॉमिस किया था जैनी से कि अब मैं सिगरेट
और जैसे ही अंगुलियों के बीच में फिर से सिगरेट देखा होगा, आपने अपना वादा तोड़ दिया, मतलब अपनी वाइफ से किया हुआ वादा तोड़ दिया आपने। मतलब हाउ, मतलब मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आपने प्रॉमिस मुझसे किया, मतलब योर वाइफ। चर्च में जाके हमने गॉड के सामने प्रॉमिस किया था कि वी विल रिमेन कंपेनियन थ्रू आउट द लाइफ, या जब तक हमारी शादी टिकती है। अंग्रेजों के तो ये भी तो रहता है कि अंग्रेजों के तो डिवोर्स भी हो ही जाएगा जल्दी, आजकल तो यहां भी होने लगे। सो promised to give up smoking, Ron, having discovered that his little brother Tom had told Janice, said under his breath, और उसने सांस लेते हुए अपनी जो सिगरेट के बाद में आप एक्सेल करते हैं ना, I'll fix him, बेटा टॉम, तूने बताया ना तेरे को तो मैं ठीक करूंगा। तो टॉम के लिए क्या कहा रॉन ने? I'll fix him for that, मैं बताऊंगा उसको उसके लिए। टॉम hearing this disappeared fast, और इतना सुनते ही टॉम भाग गया। बोला भाई को गुस्सा आ गया। And Janice was in the process of fixing a meal, and after they had eaten it, they were to go with Ron's parents to hear the results of the competition at the लोकल हॉर्टिकल्चरल शो। हॉर्टिकल्चर मतलब जो फूल बागवानी वाले जो होते हैं, आपने लौकी कितनी बड़ी उगाई तो लोग कहते हैं मैंने 20 किलो वाली लौकी बना ली, या आपने जो कॉलीफ्लावर है तो कई बार प्रदर्शनी लगती है ना, एग्जीबिशन कंपटीशन, मैंने 20 किलो की फूल गोभी उगाई है, देखो ये एक गोभी 50 लोगों के परिवार और एक होटल के लिए पर्याप्त है, यानी मेरे वाली गोभी और आपका काम पूरा। तो ऐसा हो सकता है। तो आज ही लाइए गोभी बड़ी वाली बाबूलाल जी के यहां से। So local horticultural show, although the date with his parents had been fixed several months ago, पेरेंट्स को विजिट करने के लिए डेट्स, अब देखो लोगों को माँ बाप से मिलने के लिए भी डेट फिक्स करनी पड़ती है। डैड, shall I visit you tomorrow in the evening at 7 o'clock? मतलब अंग्रेजों की कितनी दुर्गति होती होगी कि they have to take appointment, they have to schedule it। कितनी privacy है उनकी लाइफ, कितना एक्सट्रीम होगा। well, बेटी और बेटे को मिलना है, but you have to go there for an appointment। और हमारे यहाँ बाप रोज बच्चों को डांटता रहता है, अरे उठो, क्या पापा यार आप रोज ही परेशान करते रहते हो, सोने में नहीं देता ढंग से टाइम पे, सुबह सुबह मीठी मीठी नींद आती है, आपको पता है ठंडी हवा चलती है, आपको तो नींद आती नहीं, आप तो बुढ़ा गए हो। So although the date with his parents had been fixed several months ago, Ron had forgotten about it until Janice reminded him while Janice fixed her makeup। अब Janice ने ठीक ठाक से इधर उधर मस्कारा वगैरह लगा लोगों के, she fixed her makeup, आंखों को ठीक किया, थोड़ा सा रूज वूज लगा के, that's fine कि चलो बाहर चलते हैं। So had been as Janice fixed her makeup, Ron went off to get changed out of his gardening clothes, saying cynically, cynically means doubt के साथ कहा, saying cynically that there was no point on these competitions। क्या फायदा है competition का, since they were always fixed। इस डाउट के साथ बोला कोई मतलब तो है नहीं हम कंपटीशन में जाएंगे, but this competition was already fixed। He even suggested that the judges might be fixed। ऐसा हो सकता है। However, he changed his mind when they arrived at the show and discovered that his father had won what? First prize। So this is how it goes। And what is the title of the chapter? Ron's busy day। Ron was very busy। First he was doing that, then he was fixing that, he was fixing that, so he fixed some canes,
then he fixed the shelf, and he had fixed the car's engine, and then wife fixed, and then he said that I will fix Tom. Tom को तो मैं बताऊंगा. I will fix Tom for his mischief. मतलब अपनी भाभी को बताता मेरे बारे में. तुझे पता नहीं साले हम दोनों मिलकर सुट्टा मारते हैं और आज बोल रहे हैं. So this is how it goes. Daga, that's betrayal. So next is a happy ending. And ending happy होगी, मतलब पहले तो कुछ बुरा ही होना है. Ending अच्छी है. So see, and the word of the story is touch. What does it mean? I mean, touch 10 जगह मिलेगा आपको इस पैसेज में, and it will give you 10 different meanings. So see, as Lucy was a very sad little girl, she hardly touched her food. उसने फूड को टच भी नहीं किया. फूड को टच नहीं किया मतलब ना तो उसने खाया, ना कुछ पिया, छुआ भी नहीं. मतलब she did not eat, she did not drink anything. If you do not touch your food, what does it mean? You did not consume it. उसके पास ही नहीं गए, खाने के पास ही नहीं गए आप तो. So of a person with reference to food and drink, Matt never touches alcohol. Matt touch ही नहीं करता alcohol को. मुश्किल है. If Matt never touches alcohol, तो बताइए कैसा होगा वो आदमी. जो व्यक्ति कभी अल्कोहल टच नहीं करता वो कैसा होगा. He must be a teetotaler. टीटोटलर कौन होता है? जो दारू पीता है या दारू के हाथ ही नहीं जाता? जो दारू नहीं पीता है. और कुछ ऐसे होते हैं ना जो बेवड़े होते हैं, जिनको रोज शाम को क्या चाहिए? पौवा चाहिए ही चाहिए. दे नीड अ क्वार्टर. क्वार्टर से छोटा होता है उसको मिनिएचर बोलते हैं. For your general knowledge, right? There is a half, there is a bottle. Bottle का आधा half, half का आधा quarter, और quarter का भी आधा जो होता है वो miniature. That is for your general knowledge. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्सोमैनियक होता है. डिप्सोमैनियक मीन्स वो बेवड़े होता है, उनको मैनिया है. एंड डिप्सोमैनिया मीन्स uncontrollable craving for alcohol चाहिए. That's a disease. Got it? Chronic drunkenness. तो ऐसा व्यक्ति जो chronic drunkenness, आप रोज पीते हैं, कई सालों से पी रहे हैं, now you are a dipsomaniac. शाम होते आपको लगता है I want alcohol, I want alcohol, I want alcohol. तो ऐसा लगता है, and you become dipsomaniac, you become helpless. That's a disease. ऐसे लोग जो अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं and they have a strong craving for alcohol, तो हम क्या कहेंगे? He is a dipsomaniac. और dipsomaniac का I never, you abstain from. तो यदि आप इससे परहेज करते हैं, इसके नजदीक ही नहीं जाते, यू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, टच ही नहीं करते, आप इससे परहेज करते हैं बल्कि. सो व्हाट इज दैट? दैट इज टीटोटलर. सो हु इज अ टीटोटलर? सी, Lucy was a very sad little girl. She hardly touched her food even when her favorite meal was served up. आपको रसगुल्ले पसंद है और भोजन में रसगुल्ले, फिर भी आपने टच नहीं किया. It means there is something serious. You are not healthy. You are suffering from, or you are indisposed, or you are depressed. आपका मन नहीं है, मतलब मन खराब है. मन कब खराब होता है? या तो आप बीमार हो, या फिर क्या हो, आपको किसी ना किसी ने इमोशनली हर्ट किया हो, या आपको कोई चिंता हो फ्यूचर की. ऐसा ही हो सकता है.
So she didn't tell her younger brother not to touch her toys as he usually did when he started playing with the doll's house. Doll's house से खेलना शुरू कर दिया. And Lucy's aunt and uncle Con, Anna and Brian were touched by Lucy's obvious misery. बड़ा दुख है और उस दुख को देख के उनको भी लगा कि यार ये बच्ची दुखी क्यों है. They were touched. तो हुआ क्या, पहले तो क्या किया, भाई ने बिना पूछे उसके टॉयज को छेड़ लिया. अक्सर होता है छोटे बच्चों में, दूसरे के खिलौने से हम पे खेलेंगे, हमारे वाले देंगे नहीं, आप वालों को छोड़ेंगे नहीं, हमारे वाले देंगे नहीं. So if a person, especially the children, were told never to touch their mothers, यानी मदर के काम में आप इंटरफेयर नहीं करोगे. बच्चे कहाँ मानते हैं. They love doing what they are told not to do. बच्चों को बोला कि ये नहीं करोगे, पहले करके देखेंगे साला क्या होता है. बच्चों को बोला जाए ना कि तुम क्रिकेट मत खेलना, तो अब सारे दिन क्रिकेट ही खेलेंगे. आप लोग मना कर रहे हो, इसका मतलब इसमें कोई रहस्य तो है. And you the people don't want I should enjoy it. You cruel people. You just don't want my happiness. You all are against my happiness and you are in favor of my misery. आपको मुझे दुख चाहिए. तो बच्चों को ऐसा लगता है क्या है यार, अरे ऐसे बेटा ऐसा नहीं करते. अब क्यों नहीं करते, मुझे मजे आ रहे हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए. अरे इस मजे के चक्कर में भी नुकसान हो जाएगा, कुछ टूट फूट जाएगा. नहीं टूटेगा फूटेगा, मैं रोक लूंगा. मतलब मैं त्रिलोकी के दर्शन जानता हूं, मुझे पता है क्या टूटेगा क्या फूटेगा. एंड दिस इज हाउ किड्स लव टू इंटरफेयर विद. हस्तक्षेप किए बिना मानेंगे नहीं वो. Usually impassive of a person, Rose was touched by Bert's concern for her. ओए होए हाय मैं मर जावा, है ना. टस्ट बाय. भाई ने आके कहा कि देख तेरे को चिंता हो ना, मुझे बताना तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है. छोटे भाई को इतनी बात से भाई भरत और राम का सब भाव आ गया. सो भारत के भाव को देखकर भगवान राम क्या हो गए थे. ही वॉज टच्ड, बड़े इमोशनली बेचारे मूव हो गए और बोले भारत तेरे जैसा भाई होना तो राम को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. यू आर मूव्ड, बिल्कुल ऐसे अंदर से. एंड इफ यू आर मूव्ड मीन्स यू आर मूव्ड इमोशनली. यू नो ही वॉज मूव्ड, दैट वॉज अ मूविंग. सो देयर वॉज अ मूविंग सीन इन द मूवी. मूविंग सीन का मतलब सीन आप देख रहे हो लेकिन आप में फील आ रहा है. ओए होए. तो बहुत सारे लोग आपको देखा होगा कि कोई माँ जो है वो मूवी में रो रही है तो कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाते और वो फील करने लगती है उसको. सो दे आर मूव्ड बाय द सीन. दैट्स अ मूविंग सीन. So Rose was touched by Bert's concern for her. It means he was moved. Emotionally वो feel आप में आ गया है. The recession didn't really touch firms like that. Didn't really touch. यानी touch मतलब प्रभावित नहीं किया. किनको, जो ऐसी फर्म थी जैसे कोरोना में यू नो कोचिंग इंस्टीट्यूशन आर क्लोज. अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन कब खुलेंगे. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुलने की संभावना 16 जुलाई से है. और जिन बच्चों के वैक्सीन लगे हुए हैं केवल उन्हीं को अलाउ किया जाएगा. तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए जितना जल्दी हो सके. आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 तारीख से भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खुलने का मौका मिल जाए. तो ऐसी संभावनाएं हैं. ऐसा सरकार क्यों करेगी. एक बार पूरा बाजार खोलना है ताकि थर्ड वेव आए और बंद किया जाए तो ऐसा ना हो कि लोगों को लगे यार उनको तो खोल दिया था हमें नहीं खोला था. तो एक बार सबको ओपन करेंगे और उसके बाद में सबको धीरे धीरे क्या करेंगे,
वापस से लॉक कर देंगे, क्योंकि ब्रिटेन में थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, राइट. सो यू नीड टू नो कि ज्यादा ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल. सो एटलीस्ट प्लीज गेट वैक्सीनेटेड, सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि भाई देख मेरे भी लगा हुआ है. That's there. So the recession didn't really touch firms like that. A fact have an effect on concern. If a person with reference to a loan friend tried to touch his brother, if you try to touch means you approach na, you approach somebody, you try to touch a person. Try to touch a person means try to contact a person, try to approach a person. So here, let's say Anna and Brian were touched. They were touched means they were moved. They were moved by Lucy's obvious misery, although the sudden rise in unemployment in the country had not touched either of them. And Anna and Brian were untouched. It means they were not affected by unemployment induced because of COVID-19. ऐसा भी हो सकता है. It had affected Lucy's parents very badly, since both of them had been declared redundant. If you are declared redundant means आपको जाना पड़ेगा, you are laid off, आपकी जरूरत नहीं है. तो redundant मतलब आप जरूरत से ज्यादा है, so you are surplus. Surplus labor has to go. So they were declared redundant. It looked as though they would have to sell the family home. ऐसा लगा कि उनको शायद घर बेचना पड़ेगा. And Lucy was devastated. She was destroyed. पूरी तरह से बिखर गई. If you are broken, you are shattered, you are devastated. Bob, Lucy's father, had refused to touch either his brother, और बॉब के जो फादर, बॉब जो लूसी के फादर हैं, उन्होंने मना किया कि वो किसको टच नहीं करेंगे, ब्रायन को भी टच नहीं करेंगे, ना ही अपने पापा से क्या मांगेंगे, लोन मांगेंगे. He was far too proud to do this. उनको इतना इस बात का घमंड था कि वो नहीं कर सकते थे. He was so proud that he could not do it. So he was so proud. He was far too proud to do this. He thought that there was something suspicious about the only job. Suspicious मतलब doubtful था. किसको लेके doubtful था? संदेह था about the only job which he had been offered, and he was far too unable to touch anything the least bit. Least bit मतलब छोटे से छोटा कुछ भी ऐसी चीज जो इलीगल और डिसऑनेस्ट होगी ना, उसको वो किसी भी सूरत में क्या नहीं करेंगे, टचे. तो जो नया जो जॉब उनको ऑफर किया गया, दी ओनली जॉब ही वाज ऑफर्ड, उसको लेकर वो क्या थे, उनको डाउट था कि यार ये अच्छा जॉब नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, और कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, इसलिए आई विल नॉट गो फॉर दैट जॉब. सो in negative of a person, Jim needs a job badly, but he still wouldn't touch that firm. He wouldn't touch means he will not approach, he will not be involved, he will not join. So next, suddenly Anna touched Lucy's arm gently, suggesting that it was time to go to bed since her parents might be very late. Her uncle Brian promised to read her a story, since Lucy thought that no one could touch him as a storyteller. और उनके बराबर क्या है, कोई नहीं है, उनको कोई नहीं छू सकता, means he was uncomparable ना, मतलब उनके बराबर नहीं हो सकता, there is no match for him. So he is a great story, right? He is a great storyteller and nobody can touch of an object. So Lucy was having difficulty getting to sleep, partly because some branches kept touching the window. बार बार आकर के क्या कर रही थी, विंडो को टच कर रही थी, तो विंडो पे आवाजें आ रही थी, and making a noise. Then she heard her parents arrived. Her father had touched 80 miles per hour. तो टच 80 miles यानी किस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, 80 miles per hour की स्पीड से, to get back and tell his children
that he had another job, कि अब क्या हुआ है, मुझे दूसरा जॉब मिल गया है, यानी एंडिंग कैसी है, हैप्पी एंडिंग. सो अल्टीमेटली दिस वाज इट. एंड एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू दिस डेज, और बच्चों के लिए ये हमेशा समस्या बढ़ती जा रही है. इसलिए आप देखिए स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर के बहुत कंपटीशन हो गया, बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग हो गए हैं. सभी बच्चों की ज्यादातर आप देखिए जब भी मार्क्स आते हैं तो 95 प्लस आने लगे हैं. पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इस बात पर कंसर्न है कि देयर किड शुड रीड अ लॉट. सो दिस इज हाउ इट गोज. सो लूसी वाज अ वेरी सैड लिटिल गर्ल, and the reason was his father had lost a job. His father had been declared redundant. That's there. So thank you. This was all for this morning, and I think you just enjoyed a lot, I believe, and it has been wonderful. And all these morning sessions I have I enjoy a lot every morning, and this is something you will be able to review at least. You can replay it and learn something that you had missed. So thank you for being with us. See you tomorrow, same 7:15. Keep on learning and keep on enjoying. Stay happy and stay